positive, right? So these two are positive. If one increases, the other decreases, then we have, and the other does whatever it wants and दूसरी वाली अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है, there's no relation, तो फिर null correlation. सही, ठीक है. Now the question is कि ठीक है, that's fine and all, but how do we represent them on a graph? So let's suppose we have a graph paper, right? So always remember, whenever you draw a positive correlation, right? Whenever you draw it, your positive correlation wala graph is gonna look like something like this. Like, let's take this line, get a slant a little bit. It's always gonna be slanted and pointing upward. It's gonna be upward sloping line, upward pointing diagonal line as a hamisha. Whether if it's this one correlation where the both values are increasing, or if it's correlation जहाँ पे दोनों values decrease हो रही होंगी, you're always gonna have this line. That's a positive correlation. So whenever you see this line on a graph, that's a positive correlation. Exams can there, believe it or not, they give you 4 marks. They give you exactly 4 marks for just drawing the correct line in exams. So that's how much weightage they give to correlation. So 4 mark का सवाल का exam का सवाल आएगा जहाँ पे आपको line draw करनी पड़ेगी. Any idea what do you do when there's negative correlation? क्या करना है इसको, मैं क्या करूं? ऐसे? This one? So Irene is right. Whenever you have a negative correlation, जहाँ पे एक value increase हो रही, दूसरी value decrease हो रही, you are going to have a downward sloping line. So that is going to be the line of best fit. So just remember, upward sloping is the positive correlation, downward sloping is the negative correlation. What happens if we don't have any correlation? अगर ऐसा होता है. So I was quick कह रहा कि ऐसा होगा, but that is not going to be the case. You made a symbol, you made a gesture. So student सामने is absolutely correct कि जहाँ पे correlation नहीं होता, वहाँ पे जो graph की line होगी best fit is going to be a very horizontal line. If you want to show a correlation which says null correlation, no correlation, this is going to be your line. It's going to be completely horizontal. So good job. Null correlation की line हमेशा horizontal again. This is something that CIE really appreciates if you guys know this. Okay, just upward sloping is positive, downward sloping is negative, and the horizontal line is null correlation. So we're gonna leave it at that. अच्छा, अभी तक हमने पिछली क्लास में we talked about the values of correlation के कौन सी value strong होगी, कौन सी values weak होंगी, and positive correlation, negative correlation वगैरह वगैरह क्या होता है, and null correlation क्या होता है. Today we're gonna talk about something. Today we're gonna talk about something known as a sampling technique. As in, when you conduct experiments, right? You want people in your experiments. You need people in your experiments, and it's very, very important that you figure out कि मैं जो लोग आएंगे मेरे experiment के अंदर, how do I get them? What is the technique that I use to get them? So तुम्हारे syllabus के अंदर, I'm sure business studies के बच्चे भी यहाँ पे होंगे, online वगैरह, उनको भी पता होगा sampling technique. If you guys have not approached the sociology के अंदर भी अपनी sampling techniques होंगी. I don't know if you guys have done it or not. Psychology के अंदर भी अपनी sampling techniques हैं. So in psychology, you can get people in your experiment using 3 methods. कोई idea what those 3 methods are? The 3 techniques that you can use to gather people in your experiment. Any idea what that is? Sampling technique. The floor is open for both online and face-to-face students. So like, any idea how do you get people in experiments? Irene says कैसे आगे करना शुरू हो जाएंगे, हम ऐसे जाके करते ही हैं, लेकिन ऐसे आके किस तरह करोगे, उसके अंदर भी 2 रास्ते हैं. Safia, right? You're sitting in front of me, right? So I'm going to ask a question to Safia. Whatever Safia says, I'm going to repeat it at your end. I hope कि तुम लोग को आवाज आ रही होगी. I'm literally struggling. यहाँ पे मैंने अपने मास्क के अंदर माइक फंसाया हुआ है क्योंकि it's a face-to-face and online class at the same time. All right. So yeah, Safia, if I give you a task, you go outside right now, you conduct an experiment.
The experiment is gonna be who prefers which soft drink, whether people prefer Pepsi, whether people prefer 7-Up. How would you do it? Pepsi versus 7-Up. How would you do it? Acha, you would do a questionnaire. ठीक है ना? On how many people would she do a questionnaire? I'm gonna ask. कितने लोग के ऊपर तुम questionnaire करोगी? जितने मिलेंगे. All right. तो जितने मिलेंगे. Who is the first person that you're gonna approach? I'm asking Safia. पहले किसके पास जाएगी? The first person. First person you see, and they could be anyone that you see. Doesn't matter whether you know him, they know you. Doesn't matter. All right, could be your friend, could be a stranger, but has to be the first person you see. All right. And तुमने कितने लोगों पर करना था? As many as you can. Let's suppose I will say 100 लोग के ऊपर करो. Will you do it on the first 100 people you see? So Safia is going to do an experiment through a questionnaire. लोग के पास जाएगी, she's going to give a questionnaire to 100 people. And those 100 people, doesn't matter who they are, whether she knows them, whether she doesn't know them. The criteria is they have to be the first 100 people that come in contact with her. If you happen to be the 101st person, Safia तो आपका experiment नहीं करेंगी, that's gonna be an experiment. So that's one criteria. मैं इसका sampling technique इसने मारी हुई है, अभी मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा, but that is something that you guys would do as well. I presume if you were in Safia's क्या कहते हैं shoes, इसने यहाँ पे एक sampling technique मारी. I'm not gonna announce that name अभी, मैं बाद में announce करूंगा, but that is one way to go about. Any other technique that you guys can do other than the first people I come in contact with? Any other tariqa to get people in your experiment? So you're saying, you know what, why don't involve students, you involve teachers as well? Is that what you're saying, Irene? All right. So Irene is saying, you know what? Don't do the 100 people that come in contact with you. Make it more specific. 100 students that come in contact with you. क्योंकि सफिया के केस के अंदर क्या हो रहा? उसने सिर्फ बोल दिया कि 100 लोग जो मेरे कांटेक्ट के अंदर आएंगे. It could be the guard, it could be the teacher, it could be the admin staff, it could be students. Irene says, you know what, make it specific, make it 100 students that come in close contact with you. But I'm going to say, even if you change the criteria, the sampling technique is going to be the same. The way you approach people is going to be the same. मैंने उसका अभी नाम नहीं बताया, जो तरीका लोग को अप्रोच करने का नाम मैंने नहीं बताया, but basically Irene is doing the same thing as Safia is. The only difference is वो अलग लोग के पास जाएगी, Safia अलग लोग के पास जाएगी. किस तरह लोग लोगे? और कोई तरीका है लोग लेने के लिए तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के अंदर? किस तरह? What technique, what method would you use to get people in your experiment? That's what I'm asking. All right, so another feedback मेरे पास आता है कि we can ask volunteers, we can ask people to take part in our experiment. के भाई, you know what, I'm gonna conduct an experiment, why don't you come in my experiment? ठीक है ना, ये फला फला रूम के अंदर हो रहा है. So like I'm gonna ask for volunteers. All right, so volunteer के अंदर, how would you make people take part in your experiment? Volunteering is a valid method. You can ask people to come to you. How would you make them come to you? People in the online class, how would you make people come to you? Volunteer karwana, how would you make people come to you for an experiment? There's an experiment going on, I need people. All right, so like Irene is gonna say कि मैं लोग के पास जाऊंगी, hey Mariam, there's an experiment going on, you want to come? Mariam is like, I don't know, let's see आगे क्या होता है. Then Irene is gonna go to Safia, आना है कि नहीं? Safia's like, no, I'm sorry, I'm too cool for this. And फिर Safia नहीं आएगी. But Irene is saying, I'm gonna go and ask people. All right, अब मेरी बारी बोलने की. See, अभी तक you guys fundamentally जो तुमने technique बताया, first let's tackle Safia's situation. She said, the first 100 people I see, I go to them, make them fill out a questionnaire, I never see them again. I'm going to ask certain questions from Safia. Questions.
Sophia, the people that you approach, right? First 100 people, are they gonna be the closest to you in proximity? Madhab, are they gonna be the closest to you in distance? All right. They're gonna be the closest people in her distance. Number two, तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि सामने now you are down to 99 people, 99 हो गए, एक बंदा चाहिए, तुम्हारे पास ऑप्शन होता है, तुम्हारे पास दो लोग हैं, एक को तुम जानते, एक को नहीं जानते, लेकिन तुम किससे कर सकते हो? सिर्फ एक से, सही है। सो सिनेरियो इसके 99 लोग हैं, सामने दो खड़े हुए हैं, one that she knows and the other person that she doesn't know. सफिया से पूछता हूं, तुम किसके पास जाओगे? अच्छा, क्योंकि the person I know may be thinking कि मैं experiment नहीं करी, मैं सब मजाक कर रही हूँ, and they might ruin my experiment. All right, perfectly fine. Mariam, same question to you. अगर तुम्हारे पास 100 लोग के experiment करना है, you have 99 people done, you need one more participant, two people in front of you, one that you know, one that you don't know. Who would you go to? जिसको तुम जानती, जिसको तुम नहीं जानती. All right, you need, Mariam, you need to do an experiment, ठीक है? You need 100 people. Scenario इसके तुम्हारे पास 99 people हो गए. You need one more participant. Two people are left in front of you. You can only ask question from one of them. Who would you go to? The person that you know or you don't know? You don't know. Why would you go to a person that you don't know? तो bias हो जाएगा एक तरीके से. All right. So I involve Sophia in the problem. I involve Mariam in the problem, and Irene the same thing, but you will only go towards the student. Who would you go to? Who's going to be the last person that you don't know or don't know? So you would go towards the person that you know. Why? All right. Online class के बच्चों के लिए I have Aisha, I have Manya, I have Zan. ठीक है ना? तुम तीनों से सवाल है. तुम्हारे सामने ये सिनेरियो, 99 people, one more person to go. आखिरी बंदा, किसके पास जाओगे? जिसको तुम जानते हो, जिसको नहीं जानते. What do you guys say? कोई एक आंसर मुझे दे दे. I have two people saying they will go towards people that you know. Aisha would say, I would choose the person that I don't know. ठीक है, interesting. But let's talk about this. ये सैम्पलिंग टेक्निक जो मैं अभी तुम लोग से करवा रहा हूँ, जहां पे तुम लोग खुद लोगों के पास जाओगे, that is known as an opportunity sampling. कभी कभार ये तुम्हारे बिजनेस क्लास के अंदर दूसरे नाम से आ रहा होगा. I'm just typing with one hand, ठीक है ना? Convenient sampling के नाम से आ रहा होगा. Business students might have heard of it, ठीक है ना? Doesn't matter. Convenient sampling का दूसरा नाम opportunity sampling है. What does it mean? Manya will go to a person that she knows. All right. Opportunity sampling is the one that you guys said. I will go towards the person that I just find. Those people have to be at convenience to you. मतलब जिन लोग के पास तुम जाओगे वो तुम्हारे करीब होने चाहिए. ज्यादातर लोग वो होंगे जो तुम्हें परेशानी ना देंगे. ज्यादातर तुम वो लोग होंगे जो तुम्हारे हिसाब से, you know what, सही से जवाब देंगे, right? So answer me this. If you do that, if you do an experiment on the people closest to you or people who are easy to access to you, are you being somewhat biased? यहाँ पे तीनों बच्चे सामने, उनकी गर्दन तो हिली के they are being biased, ठीक है ना? The answer is yes, you are being biased. अब मैं सवाल पूछूं, तुम किस तरह बायस हो रहे हो? यहाँ मसला आ जाएगा. Do you know exactly how you're being biased if you do this? तो मरियम बोलिए, you know what, if I do this, I'm not giving everyone a chance to be my experiment. You're absolutely close, ठीक है ना? You don't know how close you are, but you're so close to this. You're absolutely right. बिल्कुल करीब हो, बस एक और सेंटीमीटर आगे धक्का देना है. Mariam is
really close. She's saying मैं हर किसी को मौका तो नहीं दे रही. अगर बंदा मेरे एक्सपेरिमेंट में होता है नहीं होता, it depends on me entirely, not up to them. So that's the problem. Now if you go, अच्छा, I'm gonna pause यहाँ पे. I'm gonna move on to another sampling technique जो volunteer करवाना है. यहाँ पे क्या आयरीन ने बोला था, you know what, I'm just gonna go word of mouth. Unexperimented के अंदर. Irene, the people who you will ask, are they gonna be in your close proximity? And are they gonna be the people that you know? Probably. So when you ask people whether you wanna come or not, technically you're not making them volunteer. वो यहाँ पे opportunity sampling के अंदर चले जाएगा. Volunteer sampling बताता हूँ क्या होता है. Volunteer sampling के अंदर you need a medium पहले. You need something to advertise पहले. It could be a poster, it could be a social media poster, it could be a radio program, it could be a क्या कहते हैं, I don't know, print media, it could be anything, but you need something to advertise, a flyer वगैरह. People look at that thing, people read that thing, and they come to you. There's also a problem यहाँ पे. There's a big problem यहाँ पे. If you do this, you know what? Wales College कहाँ पे? Gulshan में, right? I announce it to the entire country कि Wales में experiment हो रहा है. Who do you think is gonna come? The chances are बिल्कुल सामने जवाब है, गुलशन के लोग ज्यादा आ रहे होंगे. ये कॉलेज गुलशन में वॉलंटियर सैम्पलिंग का सबसे बड़ा मसला होता है कि पीपल, अब जिन लोग को तुम्हें बुलाना है वो अपने हिसाब से आ रहे होंगे. अपॉर्चुनिटी का तुम अपने हिसाब के पास लोग जा रही थी, वॉलंटियर के अंदर वो अपने हिसाब से आ रहे होंगे. तो नंबर वन, द लोकेलिटी इज गोना बी अ प्रॉब्लम. यू आर गोइंग टू हैव पीपल लार्जली फ्रॉम वन लोकेलिटी. तो अगर लोग गुलशन से ज्यादा आ रहे होंगे, मैंने पूरे पाकिस्तान को इनवाइट किया था, एंड इफ आई हैव सम रिजल्ट कमिंग आउट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, can I say that the results that I got from people that I got from Gulshan represent the results for entire Pakistan? So you have a bias, yeah, narrowed down sample. Number two, depends on what medium that you use to advertise. The medium that you use to advertise, तुमने किस तरह किया? All right, so yes, हम किस तरह करेंगे? Online people, you guys also chip in, right? हम किस तरह advertise करेंगे? हमारे पास experiment हो रहा है. What techniques? We have social media. ठीक है, जबरदस्त, बोलते रहो. और कोई? टीवी. और कोई? फ्लायर्स. नाइस. फ्लैश की स्पेलिंग ये होती है ना. रेडियो. ऑलराइट, मानिया से रेडियो के ऊपर एडवर्टाइज करेंगे. ऑलराइट, वैसे वी डोंट डू ऑल ऑफ दिस. हमारे पास पैसे इतने नहीं होते रियलिस्टिकली स्पीकिंग. हम ज्यादातर सोशल मीडिया और टीवी पर चलाते हैं. ज्यादातर हम कर नहीं पाते पूरे के पूरे. बस लेट्स सपोज दैट वी डू ऑल ऑफ देम. We do all of them. There's still gonna be a problem. If you advertise it on a television, I'm gonna just ask you guys. We have social, we have internet now. You have Netflix, Amazon Prime, whatever. Do you guys watch TV? Even if you watch TV, कौन से चैनल देखते हो? और मैं किस चैनल पे एडवर्टाइजमेंट रन करूंगा? मीनिंग, चलो मैं टीवी के ऑडियंस को तो मैं दे दिया, चला भी दिया टीवी पे. हो सकता है जिस चैनल में मैं चलाऊंगा वो चैनल कोई देखे ही ना, या कम लोग देखें. तो एट द एंड जो तुम्हारे पास जो लोग आएंगे, इसका मतलब ये वो लोग आएंगे जिन्होंने वो चैनल देखते थे. वो लोग तो नहीं आएंगे जो दूसरे चैनल देखते थे. इसका मतलब the people who watched another channel at that time did not know about the experiment. उसको मौका ही नहीं मिला तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए. या जो टीवी देखता ही नहीं है उसको भी मौका नहीं मिला तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के हिस्सा बनने के लिए. So you only have people who are television देखने वाले, television viewers. Let's talk about social media. Do you think you're going to encounter the same problem यहाँ पे social media के अंदर? Not everyone uses social media. Number two, सोशल मीडिया कौन सा प्लेटफॉर्म पे मसला आ जाएगा?
Is it going to be WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat? What? Hmm. Hmm. All right. So Mariam says, okay, you know what? So Mariam says, you know what? I'm gonna spread like wildfire. Doesn't matter if my friends don't use social media. I use social media. So you know what? If anyone from the circle uses social media, this problem can be overcome. ठीक है. Older people who don't use social media, unless they have a younger person telling them, "Ke bhai experiment," they have no way of getting it. And even on social media, right? You guys are all on social media. तुम्हें हर चीज नहीं पता चलती social media. There's so much content वहां पे. It's easy for your experiment to get filtered out. So meaning social media के ऊपर भी reach कम होगी. The only person who by chance gets to see your ad is gonna come into your experiment. So the meaning is कि सारे के सारे medium के अंदर there's a problem of the source. What if people don't use this? और location के ऊपर, what if people live far? Yeah, I'm just typing one hand away. You have these problems. Now, एक और चीज. Let's suppose I get rid of all these problems. You know what? Forget Pakistan. Forget all the other mediums. You know what? I'm gonna do an experiment in Wales. Wales के ऊपर flat लगा, a kid will miss it out. And Wales के अंदर करूंगा. So and I want to apply my result to Wales, तो मैं फंसूंगा नहीं पाकिस्तान के ऊपर रिजल्ट अप्लाई करने से, क्योंकि Wales के अंदर ही करना है, तो Wales के बच्चे लूंगा. अब locality का मसला नहीं होगा, क्योंकि everyone lives in the same location. Your study is in the same location. So I do this. Flats har jagah like there's going to be a problem. It's up to them to come, right? बच्चा आता पास नहीं आता, किस चीज को डिपेंड करेगा? इंटरेस्ट or online people, your chance for Zabardast. It will depend upon whether they're free or not. You cannot everyone has the same schedule. So basically, at the point that I made earlier, it's up to their convenience. So we fix that problem. We fix that. You know what? People don't want to come because it's not convenient for them. For example, they don't like it. Unka interest nahi hai. Or for example, unka free time nahi hai. So we change this. We sort of add a reward. कभी कभार हम कैश रिवॉर्ड दे देंगे, आने के आपको like 5K मिलेंगे, या आने के आपको like what like 5 credit hours मिलेंगे if you're a uni student. Wales का मुझे मार्किंग सिस्टम नहीं पता. I don't think you can do that. यहाँ पे पैसे देंगे बच्चों को or something like that. So you do that. Sometimes you add a reward so people find it more convenient. There's still a problem. अब क्या मसला आ सकता है? Is there a chance कि someone इसके बावजूद भी नहीं है? If yes, why? Even if you're doing it Wales, हम हर बच्चे को 5,000 रिवॉर्ड देंगे, फ्लैट भी हर जगह लगा हुआ है. Still, some kids will not show up. Why? वो? Yeah. All right. So it's against their values. That's why they will not participate. उसके अलावा? वो तो सही है, जाना नहीं होता, लेकिन रिवॉर्ड डालने के बावजूद भी क्यों नहीं आएंगे? एक तो उनके वैल्यूज के खिलाफ है, आप कुछ नहीं कर सकते. वैल्यूज के खिलाफ के अलावा और क्या रीजंस होते हैं रिवॉर्ड डालने के बावजूद भी नहीं आ रहे? Irene says, you know what, reward doesn't matter to them. हो सकता है कि they might be those people who don't need money, they have money. Or who might be those people जिनको grades की जरूरत नहीं क्योंकि they have grades, they're A graders. तो yes, if you do it in real life, ठीक है ना, अगर तुम असल में experiment करते हो, let's suppose कि मैं IBA के अंदर experiment करता हूँ, and whoever comes, I will give them 5K. Only those people will come who are from a lower socioeconomic class.
जिनके पास पैसा है वो नहीं आएगा. तो again you are still having this convenience issue. The volunteer sampling is सबसे बड़ा मसला ये है कि people are gonna come at their own convenience no matter how hard you as an experimenter try. So you won't get everyone that you want. Opportunity sampling in there is your problem now. You are going to access people at your convenience. So इसका मतलब you're not gonna reach everybody. तो दोनों के अंदर मसला क्या है? वॉलंटियर के अंदर you don't get everybody. Opportunity के अंदर it's you who doesn't go to everybody. And the thing is sampling technique का जो reason होता है, the people that we want, right? For example ये 50 लोग हैं, 500 लोग हैं, चलो. We want these 500 people to be, इसको क्या करूं? Send it back. We want this 500 people to be some sort of representation to our target population. Let's suppose that's the country of Pakistan. We want these 500 people to represent these results. So that's why we want everybody. We want diversity. We want people from every single part of the country. We want every single race. We want every single gender, age group, whatever. But opportunity के अंदर you don't get that. Voluntary के अंदर you don't get that. एक sampling technique बचती है जिसके अंदर we can possibly get that. Do you guys know what that is? वो opportunity जाएगी. All right. Irene says, you know what, you travel across the country and you select people who meet your criteria of diversity, age, race, gender, whatever. You do it on your own. There's still gonna be a problem. Irene, whoever, okay, let's suppose I pick up a person of Pashtun origin. Irene कहती, you know what, I'm gonna travel to Pakistan, I'm gonna find a person of Pashtun origin. And I go to their place. The person who is of gonna be Pashtun origin on your experiment is gonna be the person, is it gonna be the person who comes in contact with you of that area? Clear? All right. Irene कहती कि you know what, I'm gonna go and do this on my own. I'm gonna pick people of different diversity खुद से. ठीक है. So I have a question of Irene. Let's suppose Irene तुम्हें एक पश्तून पार्टिसिपेंट चाहिए. तो obviously तुम उनके इलाके में जाओगी. अब वहां पे हजारों पश्तून है. तुम्हारे पास जो पश्तून आएगा वो कौन सा पश्तून होगा जिसके तुम कांटेक्ट में आओगे? तो बेसिकली अगर उस इलाके के अंदर 100 पश्तून थे, Irene is going to pick one पश्तून out of the 100 people. So my question was to Irene, क्या वो एक बंदा पश्तून जो है Irene तो उसी को लोग तुम्हारे कांटेक्ट के अंदर आएगा? Irene said yes. तो बाकी 99 लोग तो बिसाइड पे हो गए. तो it is still gonna be opportunity whether you do it or not, क्योंकि वो पश्तून बंदा तुमने सिलेक्ट किया था तुम्हारी कन्वीनियंस के ऊपर था, क्योंकि he was just there. तो फिर क्या करें? What is the solution? क्योंकि we cannot go and select people on our own. पहली बात ये ऑनलाइन क्लास के लिए एंड सामने बच्चे के लिए. Do you understand the problem? वैसे मसला समझ में आ रहा है? ऑनलाइन पीपल मसला समझ में आ रहा है क्योंकि सामने वाले को तो समझ में आ रहा है. I'm really concerned about the online class वैसे मसला समझ में आ रहा है ऑनलाइन वालों को? कोई एक बच्चा जवाब दे दे. Yes, I understand what the problem is. Sir, can you repeat your question? All right, Aisha. The problem with volunteer sampling I have highlighted. The problem with opportunity sampling that I have highlighted. So do you guys understand the problem with each of these? Do you understand the masla kya hai opportunity or volunteer ke andar? That I don't have everyone, right? I'm gonna have very few kya kehte hain, selection of people. Not everyone is getting an opportunity. Kind of, yes. Aisha is absolutely right. ये तुमने पहले भी और ये मरियम ने भी बोला था कि not everyone is getting an opportunity. That is the problem. Not everyone is getting an opportunity to be a part of the experiment. And we want everyone to be in our experiment, but not everyone is getting the opportunity. So what do? I'm going to tell you something, okay? The only solution left is a sampling technique called random sampling, okay? I'm going to stop right here. तुमने random allocation का लफ्ज़ सुना था पहले कभी?
मैं तुम लोग को रैंडम एलोकेशन पढ़ाया था। रैंडम एलोकेशन कहाँ पढ़ाया था, कोई अंदाजा है? कौन से डिजाइन में? तुमने सुना है कभी? रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम एलोकेशन में क्या फर्क है? एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन क्लास, एनीवन फ्रॉम द फेस टू फेस ग्रुप? क्योंकि किड्स कंफ्यूज दिस टर्मिनोलॉजी अ लॉट। एक तो होता है रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा होता है रैंडम एलोकेशन। सैम्पलिंग समझा रहा हूँ, एलोकेशन नहीं समझा रहा, क्योंकि एलोकेशन समझा चुका, लेकिन दोनों को मिक्सअप नहीं करना। तो हम आस्किंग के एलोकेशन और रैंडम सैम्पलिंग में क्या फर्क है? Alright, let's go back in time थोड़ा सा। Let's go to a time जहां पे हम लोग एक डिजाइन करते हैं which is known as an independent measure design, याद है? ठीक है, तो independent measure design के अंदर whoever is in group one, whoever is in condition one, this is condition one, that person cannot be in condition two. For example, if I make someone drink 7 Up and if I ask them how it is, that same person cannot drink Pepsi. The Pepsi wala banda has to be someone else. So that is क्या कहते हैं, independent measure design, where a person goes through only experiment once, क्योंकि they go through only one condition. याद आ रहा है? So let's suppose कि people in the Pepsi group वाले say कि Pepsi was, जबरदस्त and 7 Up was not जबरदस्त. Do you think there could be a problem in our experiment? In कोई extraneous variable हो सकता है इसके अंदर? नहीं, उसके अलावा या मरियम कहती है हर बंदे का टेस्ट डिफरेंट हो सकता है कि 7 अप वाले बंदे ऐसे लोग होंगे जिनका टेस्ट बट काम नहीं करता, पेप्सी वालों लोग का टेस्ट बट काम करता है। सो नाउ when you have people saying कि पेप्सी ज्यादा बेहतर है, it was because the taste bud was right. इसका मतलब your result did not come on the basis of 7 up and Pepsi, your result came on the basis of कि उनके टेस्ट बट काम करते कि नहीं करते। This is a problem. Is this an extraneous variable? Yes, it is. So अब तुम क्या करोगे? If you do an experiment like this, जहाँ पे blue वाले लोग are the people जिनके taste bud काम करते हैं, so they work. Taste buds uh, work. And red वाले लोग हैं जिनके taste buds do not work. And condition 2 is like what? 7 up. Condition 1 is what? Pepsi. अब क्या करेंगे? क्योंकि now एक ग्रुप के अंदर उनके वो लोग हैं जिनके टेस्ट बड काम करते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके टेस्ट बड काम नहीं करते। वन सोल्यूशन इज दैट कि सर हम टेस्ट बड जिनके काम नहीं करते उनको निकाल देंगे। हाँ, निकाल तो सकते हैं, बट वी डोंट वांट टू डू दैट, वी डोंट वांट टू बी रूड। तो और क्या तरीका है? ऑनलाइन सजेशन, व्हाट इज दैट? स्विच देम, कोई कह रहा है कि आप ऐसा कर लो, इवन आउट कर दो। बट हम तो इफ यू डू दिस इज गोना वर्क, क्योंकि नाउ 7 अप के अंदर एक बंदा है जिसके टेस्ट बड काम करते हैं और एक के काम नहीं करते। पेप्सी के अंदर भी यही सीन है, बट वी डोंट डू इट खुद से, वी डू इट रैंडमली। uh all right, so how this works is, right, ठीक है, red are the people जिनके taste bud काम नहीं करते, please remember that, right? I'm gonna color code them. So like this is parchment number 2, 3, 4, 5, right? And blue are the people जिनके taste bud काम करते हैं, like what, 1, 6, 7 and 8. All right. So I'm supposed to kind of evenly divide them into two groups, but I'm not gonna do that on my own क्योंकि मैं खुद से नहीं कर सकता, क्योंकि anything I do कोई ना कोई कहता है कि you're being biased, you know what, you're favoring one group over the other. So I'm not gonna do that. So I'm gonna use a random technique. What I'm gonna do is all right, online dice generator. Where's the dice?
All right, so first number we get is 4, right? Random, not in my control. The first number is 4. So partition number 4 will go in the first group, right? So we're still doing the first group. This is random. The dice set, so I didn't do it. The dice set it. Let's see, partition number 2 कौन सा होता है group 1 का? 7. All right. Let's see again. And 10, we don't have 10, ठीक है? We don't have 10. We don't have 11. एक और number दे दो मुझे यार. Come on. We have 7 हो गया. All right, 6. So we have 6, right? Let's see one more. You guys will get the idea. 4 to ho gaya tha, I guess. 4 to, oh my God, this is 3. All right. So I made this group, right? Did I do it? It's not my fault if it's balanced. It's not my fault is if it's unbalanced. It was represented on a dice. So अब डाइस के हिसाब से मैंने किया तो obviously कोई भी बंदा यहाँ पे आ सकता है. Anyone could have come here, right? This is what random allocation is. कि आप randomly लोगों को group के अंदर फेंक देते हो randomly, not by yourself. That's random allocation. I hope you guys understand that now. And इस करने से आपके ग्रुप थोड़े बहुत बैलेंस बन जाते हैं क्योंकि now you have a scenario जहाँ पे एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप completely equal है. अब जब रिजल्ट के अंदर फर्क आएगा, इट इज गोइंग टू बी बिकॉज वन ड्रिंक इज बेटर देन द अदर, नॉट बिकॉज एक बंदे का टेस्ट बड काम कर रहा है, दूसरे बंदे का टेस्ट बड काम नहीं कर रहा. गोइंग बैक टू रैंडम असाइनमेंट, कहां पे गया? ऑलराइट, रैंडम असाइनमेंट. व्हाट इज रैंडम वैसे? ऑनलाइन गाइस, हाउ डू यू डिफाइन रैंडम? इफ आई से समथिंग इज हैपनिंग रैंडम, व्हाट इज रैंडम? You're fixed now. All right, that's subject to change. It's not fixed. It's not a constant. It's random. Or quick definition. What is random? How do you define random? When you don't choose something, but what if someone else chooses for you? Or koi? Or she says, are you gonna say something? Acha, Irene says, you know what? If we don't do it, it's not random. Ho sakta hai someone else do it for us, but if we don't do it, it's not random. All right, let's see if this definition checks out. Or any, how do you define random? And most importantly, तुम्हारे अगर बचपन में किसी ने बोला होगा कि मैंने तुम्हें randomly चीज दी है, was that random or was it fixed? ये भी सवाल अब. All right. Do you guys, एक online answer है, क्या है ये? Not choosing something specific. All right, I'm going to take that into consideration. So let's suppose there is a scenario जहाँ पे you and your friend are stuck and सिर्फ एक ही decision या एक ही friend का decision आगे forward कर सकते हैं. You guys do a coin toss, सिक्का उछालते हैं. Do you guys trust the coin toss? मतलब वो सिक्का वो है जो तुमने बैंक से निकाला है. It's not rigged in any way. बिल्कुल नया सिक्का, official सिक्का, एक हेड से एक टेल है. Will you guys trust the coin? One person says, I will trust the coin. Or is there anyone who trusts the coin? You will trust the coin. You will trust the coin. So Samatin will trust the coin. ठीक है. Aisha will trust the coin. Now my second question: why will you trust the coin? किस तरह bias नहीं? She said it's not rigged. How is the coin not rigged? मतलब when you say the coin is not rigged, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा? All right, somewhat close. और कोई चीज थोड़ा स्पेसिफिक बता सकते हैं? If the coin is why online answer, we will have our eyes on it. उसके अलावा, why will you trust the coin? All right, Safia,
You said this thing जो Irene कहना चाह रही but could not find the words. Are you saying the coin that is going to be flipped has an equal chance of had equal chance of tails? अब किस्मत के ऊपर 50-50 है. अगर सिक्के के ऊपर दोनों साइड पे एक ही शक्ल बनी होती तो फॉर एग्जाम्पल दोनों साइड पे हेड होते हैं, टेल्स के क्या चांसेस होते? 0. और बंदा कहता है हेड रैंडमली आया. इज दैट पर्सन राइट और रॉन्ग? क्यों? क्योंकि क्योंकि दूसरी साइड के इक्वल चांसेस नहीं थे. हमेशा याद है रैंडम का मतलब है जितने भी ऑप्शन आपके सामने रखे हैं हर ऑप्शन के पास इक्वल चांस है आने के लिए. हेड एंड टेल में तो ऑप्शन है, वो भी आ सकता है वो भी आ सकता है, तो दोनों के पास इक्वल चांसेस हैं. अनबायस्ड. नरमीन यू राइट. डाइस के अंदर कितने साइड्स हैं? 6 साइड्स. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, लूडो खेलते तो 6 साइड होते हैं. अच्छा, 6 फ्रेंड्स. हर किसी को नंबर दिया जाता है. द डाइस सेज 6. Does that group have any reason not to trust the dice? Those people are supposed to trust the dice क्योंकि dice के ऊपर 6 साइड थे. हर बंदे को हमने एक नंबर दिया था. अब जो नंबर आया था is based on luck. फिक्स नहीं था. So everyone had an equal chance. Dice किस्मती से 6 लाया. It was random. Random के अंदर, so if in psychology if we're gonna pick people by random, इसका क्या मतलब है? Everyone in consideration has an equal chance to be chosen in an experiment. Opportunity sampling that they did not have an equal chance. The person who is far away from you, their chance automatically decreases. क्योंकि opportunity के अंदर is up to you. Voluntary sampling के अंदर the person who's far away from you, their chances volunteer. They're supposed to come to us. जितना बंदा दूर है उसके chances है कि कम होगा. इलाके में नहीं रहता ना, कम होंगे. The person who does not watch social media, उसके पास कितना chance था select होने के लिए? Almost 0. So not everyone had an equal chance because of different circumstances. कोई location की वजह से, कोई medium की वजह से, कोई XYZ. Random sampling के अंदर will remove all this problem. Random sampling will give everyone an equal chance to get selected. पहली बात ये, random sampling will give everyone an equal chance to be selected. Now the question is, how do we carry it out? किस तरह करेंगे रैंडम सैम्पलिंग? मैं बता देती होता क्या है, करेंगे किस तरह. Safia says that there is going to be a box. What about the box? और सफिया थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दूंगा. मुझे साइकोलॉजी क्लास से बेसिकली कटने से पहले द क्वेश्चन I asked was के you know what, 8 बच्चों के नाम मैंने डब्बे के अंदर डाल दिए, किसी को कोई प्रोटेस्ट होगा जब एक बच्चे का नाम आएगा? तो पीपल सेड नहीं, किसी को मसला नहीं हो, क्योंकि हर बच्चे के पास इक्वल चांस है सेलेक्ट होने के लिए. अब वो किस्मत की बात है किसका नाम निकल के आया. तो रैंडम सैम्पलिंग है नंबर 1, आपके पास हर किसी को इक्वल चांस होना चाहिए सेलेक्ट होने के लिए. नंबर 2, उस चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए एवरीवन गेट सिलेक्टेड, तुम्हें सबके नाम तो आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि जिस बंदे का नाम नहीं था उसको तो चांस 0 हो गया. So random sampling के अंदर you need to have everyone's list and उसमें से आप randomly select करोगे.
पाकिस्तान के अंदर सेलेक्ट करना होगा तो आप नासा के डेटाबेस पे जाओगे, वेल्स के अंदर से बच्चा निकालना होगा रैंडमली तो वेल्स के एडमिन के पास जाओगे, बोलोगे सारे बच्चों की लिस्ट के नाम दे दो। मसला वहां पे कब आता है, जब आप लिस्ट कंपाइल नहीं कर सकते। मुझे एसिड अटैक विक्टिम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे रैंडमली लेना है। हु हैज अ लिस्ट ऑफ एसिड अटैक विक्टिम्स? नो वन। तो कभी कभी यू हैव अ सिनेरियो जहां पे यू डोंट हैव एवरीवन्स नेम, क्योंकि यू डोंट नो हुज ऑन इट, क्योंकि नो वन हैज कंपाइल्ड इट। तो वहां पे रैंडम सैम्पलिंग नहीं ही हो सकती, क्योंकि इट्स वेरी वेरी हार्ड टू हैव एवरीवन्स नेम। बट इन प्लेसेस दैट यू डू इट, वहां पे बायस नहीं होगी। सो रैंडम सैम्पलिंग इज द बेस्ट sort of sampling there is, क्योंकि it represents everyone equally, no chance of biasness. So like three type of sampling हमने: opportunity sampling, voluntary sampling, random sampling. क्या होता है? What's the definition behind it? What's the advantage and what's the disadvantage of it? Is there anyone who doesn't get any of these? Sophia, online people, कोई बच्चे को मसला है? नरमीन, आयशा, जैन, नबील। Alright. अच्छा, तुम्हारे सिलेबस के अंदर जो हम 12 के 12 एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, वहां पे किसी के अंदर भी रैंडम सैम्पलिंग नहीं है। आई सेड इज द बेस्ट सैम्पलिंग टेक्निक। सवाल ये आता है, देन व्हाई डोंट द experimenters use this? The answer is it's very difficult to pull off. As I said, you don't have everyone's name in most of the cases. That is why तो आप बस experiments के अंदर या तो opportunity sampling हो रही है या तो voluntary sampling हो रही होगी, क्योंकि it's very, very difficult to carry it out. Uh, So like whenever we get a chance to do a face-to-face class, the first thing I'm gonna do is give you an experiment to conduct in Wales College. तो वहाँ पे sampling technique भी सबको दे दूंगा, so you guys know firsthand how easy or how difficult it is. तो आज के लिए तो फिलहाल इतना सही, ठीक है ना? तो online people, if you don't have questions, तुम लोग जा सकते हो। ठीक है, face-to-face वाले बच्चों से